पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हेलो एवरीवन। एक गाना आपने सुना होगा, आमिर खान की फर्स्ट मूवी का था शायद। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। दिस इज यूजुअली द प्रेशर समटाइम बाय फैमिली मेंबर्स, नॉट द प्रेशर। वो शायद कंसर्न भी आपके लिए करते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, वो कोर्स करना चाहिए। एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल में ये प्रेशर या ये कंसर्न बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर क्लास 12 एग्जाम्स एंड नाउ दे हैव टू बी मोर सीरियस कि फाइनली विच कोर्स दे शुड चूज। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, बिकॉज कोई के लिए हो सकता है सीए अच्छा हो, कोई के लिए सीएस अच्छा हो, कोई के लिए सीएमए अच्छा हो, कोई के लिए सीएफए अच्छा हो। कई लोग क्लैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना लीगल फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। कई लोग पहले सीए करेंगे या सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, एंड देन दे वांट टू गो फॉर एमबीए कोर्सेज। सो इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो सेशंस रेडी किए हैं, यू मस्ट वॉच इट इन द प्लेलिस्ट कॉलम ऑफ अमित बछावत यूट्यूब चैनल, जहां पर हर कोर्स के ऊपर डिटेल्ड आपको डिस्कशन मिल जाएगा। और सब कोर्स में मैंने एक पॉजिटिव बात की है कि यहां पर बहुत पैसे मिलते हैं कंप्लीट होने के बाद, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। आज का ये सेशन कुछ खास है बिकॉज आई वॉन्ट टू you all of you to hear to someone who has actually worked hard, worked in a smart manner, and he is with us today in India. ये थाईलैंड में बैंकॉक में रहते हैं, वहां वर्क करते हैं। नाउ he is here for 2 days and I requested him to share his inputs and his story with you. So please welcome Gaurav Khandelwal. He is an equity research investment analyst, and I would request Gaurav ji to explain you his story, to discuss with you his inputs. Over to you. Thank you very much, sir. So, hi everyone. My name is Gaurav Khandelwal. You can call me Gaurav, not Gaurav G. So I have been a student here at the Amit Bachhawat Training Forum since 2012. Actually, 2011 and when 2012 was when I appeared for my IPCC, and then uske baad maine apna CA complete kiya in 2016, and 2015 and I also completed my CS with an All India rank 3, all thanks to sir. So yeah, that's my introduction. I have two questions for you, 3 questions for you. I'll not take much of your time. स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्लास 12 का एग्जाम अभी दे दिया है और यही तो टाइम है मस्ती का, ये मैं नेक्स्ट 5 साल एंजॉय करना चाहता हूं, चिल करना चाहता हूं लाइफ में। सो व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस? Okay, no, that's a fair point, sir. And to be honest, right, मैंने भी जब अपना class 12 दिया, so I did want to go and chill out and have fun with friends. But if you think about this entire thing holistically, right, so it's a simple trade-off. आप या तो next 5 years you work hard, study hard, जो भी आपको करना है, you set certain ambitions for yourself, what you need to do, and then you balance the trade-off. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ that you only study and become dull. Sorry, but the point is everything has to be well balanced. Next 5 years of your life, next 7 years of your life, if you work hard, study hard, work towards your goals, and करो आप enjoy करो, that's okay. But if you do that for the first 5 years, next 40 years, next 50 years of your life is secured. On the flip side, if you don't manage this trade-off well, आप पहला 5 साल 6 साल हर दिन पार्टी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, you're not serious about your career. So then after probably 5, 6, 7 years down the line, when you see other people, your peers succeeding, doing good things in life, and that is when you will start regretting. So the next 40 years of your life, you end up regretting. So my only advice is बैलेंस इट, नॉट दैट कि आपको खाली पढ़ाई करना है या खाली आप मेहनत करनी है, मजा नहीं करना है. डोंट डू दैट, बट देयर इज अ फाइन लेवल ऑफ ट्रेड ऑफ एंड बैलेंस दैट. दैट्स माय सजेशन टू दैट, सर. गौरव, वन मोर क्वेश्चन दैट लोग जब क्लास 12 का एग्जाम दे देते हैं तो उनको लगता है क्या जो हमारे इंडियन कोर्सेज हैं, इंडिया का जो सीए है या सीएस, सीएमए, सीएफए, क्या ये करना चाहिए या मैं सीधा बाहर जाके यूएस वाले उस टाइप के कोर्सेज को करूं? मतलब व्हाट इज योर व्यू और व्हाट यू हैव सीन इन योर इंडस्ट्री, बिकॉज आई नो दैट यू आल्सो टेक इंटरव्यू ऑफ रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आपने उनमें क्या देखा और आपने अगर कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कोई कोर्स किया हुआ है, उनमें और इंडियन सीए स्टूडेंट्स में आपने क्या फर्क देखा? आई रियली वांट यू टू शेयर दिस विद देम. थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन, सर. सो द थिंग इज सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी डिग्री आप करें, all the degrees are very good, okay?
and the only point here is कि आप पूरी शिद्दत से वो डिग्री करें, आप केवल डिग्री लेने के लिए वो डिग्री ना करें. You go through the logic, and I know there are a lot of times, lot of things that probably आपको you need to do a smart work around it, right? But the entire idea being कि do it sincerely, be committed to it, and don't just do it for the sake of it. वो जो knowledge आपको मिलता है from any of these courses, Indian courses, right? So मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से B.Com किया है, and उसके बाद मैंने CA and CS इंस्टीट्यूट से respective degrees ली है. But I've had the opportunity of working with a lot of senior guys who've done MBAs from Harvard and Chicago boots of the world, right? The degree of understanding a chartered accountant in, let's say, a financial reporting, the kind of understanding we as chartered accountants have, I can go out, I can stick out my neck and say कि कोई भी Harvard, कोई भी Chicago booth, any London School of Economics person will not have that kind of understanding, that kind of depth. The way we are trained as chartered accountants, it's a very holistic approach, right? So right from your inter days to your articleship days and then your final preparation, everything has a purpose behind it, and that entire journey of 3-4 years trains you in a very solid way. So that's my piece of advice there. It's not that कि इंडिया की पढ़ाई खराब है and बाहर की अच्छी है, जो कि normal stigma सबको ऐसा लगता है, but it is nothing like that. Trust me on that. Okay, one last question, Gaurav. Suppose a student wants to enter a company which deals in equity research, or a student wants to enter into taxation practice, जो शायद आपकी भी इच्छा थी कि मैं अपना practicing firm खोलूं कैलकाटा में, and it's a good city, a city of joy. But finally, I'm happy for you, the progress which you have achieved. You went to Mumbai, then you were promoted to Thailand. तो आपको क्या लगता है that what is the actual direction? There's no universal answer कि हाँ practice ही बढ़िया है या equity research ही बढ़िया है. अगर मैं equity research की बात करूँ, what a student should have if he's planning that after completing his professional course of CA CFA, he wants to enter into the zone of equity research investment analysis like you are doing right now. What he should possess, what qualities he should possess? Right, thanks for the question, sir. So a few things here, right? So no one has a well-defined success formula. It's कि आपके ऊपर whatever works, whatever suits you well. But there are a few general guidelines which I think one should follow. So जब मैं भी अपना internship कर रहा था and मैं इसी center पे आके अपना CS law का class लेता था and CA final के classes लेता था, so I always used to carry newspaper with me, and not only carry it, read it. Which newspaper? So I used to read Business Line and Mint. And Business Line, Mint, Economic Times, ab kuch bhi, as in not a T2 drama newspaper, but a business newspaper. So ab jab pad rahe ho for 3 years, 4 years, right? So your articleship thing, just don't focus on getting your articleship completed कि boss 5 बज गए मुझे ऑफिस से घर जाना है, या just don't be adamant on कि somehow I need to just do this course, right? Build a very holistic take a very holistic approach is what I'm saying, right? आप दुनिया से एकदम परे भी मत रहिए. Know what is happening. Let's say आज इधर पे है हम, why is the US increasing interest rates? What's the impact of a Russia-Ukraine conflict which is going on? You don't need to deep dive in all of the subjects, but you need to have a broader understanding of how things move in the world. What is what? आज अगर law में भी कोई amendment आया है, तो what is the rationale behind which that amendment has come? Because everything has a reason, everything has a logic to it. And my only thing for cracking an equity research job, or for that matter, any finance or any good job in the world, right? Not only restricted to finance, but any other domain as well. The most important thing is you be aware of what is happening around you. Use your common sense. And number 3, the most important thing is be logic driven. That is the most important single thing, a single advice that you can get. So I was lucky enough to have sir with me, and then sir used to emphasize a lot on going by the logic and not just memorizing things for the sake of it. So the idea is कि आप वो logic driven रहे, and you'd find a logic across things which come to you, right? So because मैं chartered accountant हूँ, and like sir mentioned कि मेरी इच्छा थी कि मैं practice करूँ इधर ही BBD बाग में, but again things turned out to be different, turned out differently for me. So the entire idea is hard work, be focused, and be logic driven. I think those are the 3 key catalysts which will define where you are 5 years, 10 years down from today.
वो स्लोगन्स याद आ गए होंगे, साथ में बोलो, जोर से बोलो. आई रिमेंबर. एंड लास्ट वन लाइन, और तुम भी आंसर शॉर्ट में देना, बच्चे लोग बहुत टाइम हमें वॉच कर रहे हैं. अगर रैंक नहीं आया आपका कोई कोर्स में, is there any entry in good company for the job without a rank also? Can you, मतलब ऑल इंडिया रैंक दिया जाता है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, रैंक नहीं है फिर भी क्या आप अच्छा कुछ अचीव कर सकते? व्हाट्स योर टेक? So for me, my CA group 2 in my CA finals, my account I could not clear it in the first shot. Costing, I think. Cost was the subject. Yes. So I happened to score a 38. I'll be open with that, right? But I was determined कि next attempt इस time मेरा 38 आया है, तो उसको मैं reverse करूँगा. And next attempt I worked hard to make that 38 into an 83. So and I still landed up at a big investment bank. So the point is, even though if you don't have a rank, don't be disheartened. It's okay, because there are a lot of us who are appearing for its degree, but there are only a handful who get the rank. But that is not the end of the world. What matters is once you have that degree, love it, respect it, cherish it, and just be focused on what you need to do. It's okay. The degree is not the end of the world. An MBA is not an end of a world, right? Being a chartered accountant. So just a simple example, right? The most successful bank in India, which is an HDFC Bank. So the entire top C-suite of that bank for the last 20 years has been run only by chartered accountants and not folks with any fancy degrees. So that's my answer to that, sir. थैंक यू सो मच. चलिए, थैंक यू सो मच. और करियर काउंसलिंग के बारे में जानने का इच्छा हो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आप प्लीज प्लेलिस्ट कॉलम पे मैंने और भी वीडियोस डाले हैं, यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन वॉच इट. ताकि फाइनली क्या करना है, आपको अपना खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी असेस करना पड़ेगा. हमने जो अच्छी बातें आपको बताई है, ये इनका खुद का एक्सपीरियंस है. आपके एक्सपीरियंसेस हो सकता है और रिचर हो, बट यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड देन टेक योर डिसीजन. कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको, नहीं करना चाहिए, यही करो, यही बेस्ट है. इसके लिए कोई एक यूनिक आंसर नहीं है. थैंक यू सो मच.